Dear students, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल जुगताई लेक्चर नंबर 14 लेकर हाजिर है। आज के लेक्चर में हम, जैसा कि कल बताया गया था, कर्कॉफ्स वोल्टेज लॉ से मुतल्लिक ही उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे और उससे मुतल्लिक कुछ और पेचीदा मिसालें लेंगे। सबसे पहले हम एक सादा सा सर्किट जिसमें के दो लूप्स या मैशेस हैं, इसकी मिसाल लेंगे। इन लूप्स में से हमको पावर डेसिपेटेड अराउंड अ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लिहाजा जब हम सर्किट को देखेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको दो लूप्स या मैशेस में इमेजिन कर सकते हैं या फिजिकली देखा जा सकता है। और क्योंकि हमने पावर को कैलकुलेट करना है, लिहाजा हमें लामुहल्ला करंट की वैल्यू दरकार होगी। इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट के फ्लो का लूप के अंदर ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब दो लूप्स हों तो दरमियान वाली ब्रांच में अगर हमें अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो दरमियान वाली ब्रांच के अक्रॉस एक लूप को लिखते वक्त जो भी पोलैरिटी रखी जाएगी, जब हम दूसरी लूप की इक्वेशन लिखने पर आएंगे तो उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कंसिडर किया जाएगा। इस मिसाल में हम इसी तकनीक की प्रैक्टिस करेंगे। आइए सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। We want to find out the power dissipated by 3 ohm resistance. In the circuit, we can see there are two independent voltage sources. One voltage source, which is on to the left hand side of the circuit, has been marked as having a value of -2 volts, and the voltage source, which is on to the right hand side of the circuit, has been marked as a source having a 3 volt value. Now, we can clearly see that there are two meshes or loops. We designate the left hand side loop as mesh 1 and the right hand side loop as mesh 2. Now, because we are interested to find out the power dissipated by the 3 ohm resistance, which is right in the middle of the circuit, so we can see that 3 ohm resistance has been shared by both of the loops. On top of that, if we consider that a current I1 is flowing through the loop 1 and current I2 is flowing through the loop 2 or mesh 2, then the current flowing through the 3 ohm resistance, लिहाजा पावर को कैलकुलेट करने के लिए जब तक हमें इस करंट की वैल्यू जो कि 3 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रही होगी, यानी कि डिफरेंस ऑफ I1 और I2 मालूम नहीं होगी, हम पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। मजीद बरां इस एग्जाम्पल में हम कुछ प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि पहले इस सर्किट को मैश एनालिसिस या केवीएल अप्लाई करते हुए लूप इक्वेशंस लिखकर एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद हम वही अपनी पुरानी टेक्निक यानी कि नोड एनालिसिस, सिंपल नोड एनालिसिस के जरिए इसी सर्किट को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि दोनों के जवाब में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता।
ये भी आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सर्किट में नोडल एनालिसिस मैश एनालिसिस की बनिस्बत बहुत ज़्यादा आसान होगा। आइए इसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एक दफ़ा फिर स्लाइड पर चलते हैं। For the circuit, first of all, we assign the passive sign conventions to the various resistances so that when we will be applying the KVL, we don't have any confusion. Therefore, for 5 ohm resistance, the terminal which is facing the minus 2 volt source have been marked as plus, and the preceding terminal has been marked as minus. Similarly, the 2 ohm resistance has the same passive sign convention. Now, also we consider that a voltage Vx also for the 3 ohm branch, which is common between the two meshes, we mark onto the left hand side the voltage Vx. Don't worry, we have just considered that this is the voltage which is expected to be having dropped across this resistance. Whereas we have also marked for the right hand mesh, which is mesh 2, with respect to that a voltage Vy across the 3 ohm resistance as well. But note down that both the voltages have been assigned opposite passive sign conventions. Now, we have also considered that the current flowing through each of the mesh is flowing in clockwise direction. ये दोनों वोल्टेजेस जो कि हमने अननोन मार्क की हैं, यानी कि Vx और Vy, असल में ये दोनों वोल्टेजेस एक ही हैं, सिवाय इसके कि इनकी साइन कन्वेंशन को चेंज कर दिया गया है। अब हम दोनों मैशेस की लूप इक्वेशंस लिखेंगे और वहां से हम उनकी फर्दर ट्रीटमेंट करते हुए I1 और I2 को कैलकुलेट करेंगे। जब I1 और I2 कैलकुलेट हो जाएगा तो हम 3 ओम रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट को उनके डिफरेंस के तौर पर कंसिडर कर लेंगे। दोनों इमेजिनेटिव वोल्टेजेस यानी Vx और Vy के साइंस को इसलिए रिवर्स दिखाया गया है क्योंकि दोनों मैशेस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि मैश 1 में अगर आप देखें तो 3 ओम वाली ब्रांच में से क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, जबकि हम अगर मैश 2 में देखें तो 3 ओम वाली ब्रांच में उसके अगेंस्ट करंट फ्लो हो रही होगी। लिहाजा हमें Vx और Vy की पोलैरिटी को एक दूसरे के उलट रखना पड़ा है। आइए इसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड देखते हैं। For mesh 1, if we apply Kirchhoff's voltage law and try to write the equation for mesh 1, then starting from the left bottom corner of the circuit, we can see that there is a negative sign which is facing towards us. Therefore, we write negative. However, if we note down the value given for the voltage source, that has been marked as minus 2. Therefore, next to this negative sign, we put into the parenthesis a negative 2. Then we go through this voltage source and we reach at the point B. When we are at point B, we can see that while looking onto the 5 ohm resistance, we are facing a positive sign. And we have supposed that
a voltage V5 has been appeared across the 5 ohm resistance. अजीज तलबा, यहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस को V5 से मंसूब किया है, जबकि गुज़श्ता मिसालों में हम इनको V1, V2 विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिखते रहे हैं. अब हमने इस वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस लिख दिया है, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने V5 और 2 ओम वैल्यू के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने V2 और ऑब्वियसली हमने 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वैल्यूज कंसिडर की हैं उनको हमने Vx और Vy के नाम से ताबीर कर दिया है. आइए अब स्लाइड पर मैश 1 की केवीएल इक्वेशन की फर्दर ट्रीटमेंट को देखते हैं. नाउ मूविंग फ्रॉम V5 we will move downwards along the branch which is having 3 ohm resistance. When we face that 3 ohm resistance, we will consider the voltage drop Vx because that has been considered for the loop 1. And the 3 ohm resistance which is towards ourselves, that has been marked as positive. Therefore, we write plus Vx. Further we move and we can see that we reach the voltage source which is having a value of minus 2 volt. And therefore, we must stop here because in the loop when we are writing a KVL equation, no element of the circuit can be repeated. Therefore, we put all this expression equal to 0. Now for further treatment, we can apply Ohm's law so that we can write V5 is equal to 5I1. That is, we have applied the Ohm's law to the resistance having a value of 5 ohms. Also, if we apply Ohm's law to the 3 ohm resistance, then we can write Vx is equal to 3 times I1 minus I2. Therefore, we can write 2 plus 5I1 plus 3I1 minus I2 equals 0. This expression has been obtained by putting the values of V5 and Vx into the loop equation of the mesh 1. In fact, we could write this equation in one step. You can have a practice for writing this equation in one step at home. अजीज तलबा, यहाँ तक हमने मैश इक्वेशन को अलग लिख के फिर उसके ऊपर ओम्स लॉ को अप्लाई करके और मैश की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ करंट लिख लिया है. अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो मैश की इक्वेशन को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ करंट भी लिखा जा सकता है. ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप घर पे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि लूप 1 या मैश 1 की केवीएल इक्वेशन को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ करंट, जैसा कि हम नोड एनालिसिस में करते आए हैं, लिख सकें. लिहाजा आइए एक मर्तबा फिर इसी इक्वेशन की फाइनल फॉर्म को स्लाइड पर देखते हैं. Therefore, we get 8I1 minus 3I2 is equal to minus 2.
Now, we take up the mesh 2. For mesh 2, we can write the current equation applying KVL for this loop directly, so that we can have 3 into I2 minus I1. Remember, this is the current through the 3 ohm resistance, plus 2 I2. We have already considered that a current I2 is passing through the 2 ohm resistance, plus 3, which is the value of the voltage source at the right hand side of the circuit. If we simplify this equation, we can have minus 3I1 plus 5I2 is equal to minus 3. अब जबकि हमने दोनों मैशेस की केवीएल इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ करंट लिख लिया है, तो क्लियरली यू कैन सी दैट वी हैव two equations and two unknown variables. If we solve them, then we can find out the values of I1 and I2. ये solution निकालना भी मैं आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ रहा हूँ. ये सिंपल मैथमेटिक्स का मामला है, लिहाजा हम I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके आइए देखिए उनकी क्या वैल्यू आती है. आइए स्लाइड पर देखते हैं. Therefore, we get the value of I1 as I1 equal to minus 612.9 milliamperes, whereas the value of I2 has been calculated as I2 equals minus 967.7 milliamperes. अब जबकि हमने I1 और I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 3 ओम रेजिस्टेंस में से जो भी करंट फ्लो करेगा वो इन दोनों करंट के डिफरेंस के बराबर होगा. लिहाजा अगर हम 3 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो करने वाले करंट को I3 से ताबीर करें, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2. आइए इस मामला को स्लाइड पर देखते हैं. Therefore, we can write as I3 is equal to I1 minus I2. Now, our purpose is not fully solved because we need to find out the power dissipated by the 3 ohm resistance. Therefore, we can write power is equal to 3 times I3 square. That will end up as power dissipated by 3 ohm resistance is equal to 377.7 milliwatts. अजीज तलबा, अब जबकि हमने I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और उसकी मदद से हमने पावर डेसिपेटेड बाय 3 ओम रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लिया है, और ये कैलकुलेशन हमने मैश एनालिसिस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए की है. इसी सर्किट को हम नोड एनालिसिस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी पावर डेसिपेटेड बाय 3 ओम रेजिस्टेंस का एनालिसिस करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों जवाबात में क्या फर्क आता है. नोडल एनालिसिस के लिए वही सिस्टम चलेगा जो हम अब तक पढ़ते आए हैं. सबसे पहले हम नंबर ऑफ नोड्स इन दैट पर्टिकुलर सर्किट को डिसाइड करेंगे. उसके बाद हम रेफरेंस नोड के मुतालिक फैसला करेंगे. फिर हम रिक्वायर्ड नोड की नोडल इक्वेशन KCL को अप्लाई करते हुए लिखेंगे.
और उसकी मदद से फिर हम पावर डिसिपेटेड बाय 3 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आइए ये सारा प्रोसेस अब स्लाइड पर देखते हैं। We have got the same circuit as we have been treating using the KVL method. Now we can see that there are 4 nodes. The bottom node can be taken as the reference node, whereas the top 3 nodes are the nodes for which we can write the nodal equations. However, because we are only concentrating upon the 3 ohm resistance value, therefore we have to write the nodal equation only for the central node. Now we can try writing this nodal equation as 0 is equal to V minus 2 divided by 5. Now you can see that between the node which is marked as V and the minus 2 volt voltage source, there lies a 5 ohm resistance. So we have written the expression in terms of current actually, plus V divided by 3. Once again, we have written the term in terms of the current plus V minus 3 divided by 2. Now we have considered the branch which is having the 2 ohm resistance in it. Now if we solve this equation, we can end up as V is equal to 1.065 volts. Therefore, we can calculate the power dissipated by the 3 ohm resistance as P is equal to V square divided by R, and that will end up as 378.1 milliwatts. अजीज तलबा, आपने देखा कि दोनों वैल्यूज़ जो हमने पावर से मुतल्लिक मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट की हैं, उनमें थोड़ा सा फ़र्क आया है। ये फ़र्क घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम राउंडिंग एरर के नाम से ताबीर करते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेशंस करते हुए तकरीबन 4 डेसिमल डिजिट्स तक जवाबात को हासिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स जो फ्रैक्शनल होते हैं वो मैचिंग मिल जाएं। अजीज तलबा, अगली मिसाल में हम, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, किसी भी 2 पॉइंट्स को लेकर उनके अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। पिछली मिसाल में हमने किसी एक पॉइंट और कॉमन रेफरेंस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेजेस को कैलकुलेट किया था, लेकिन इस मिसाल में किसी भी 2 पॉइंट्स अदर देन द रेफरेंस पॉइंट हम वोल्टेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस सिलसिले में आइए स्लाइड पर सर्किट को देखते हैं। The circuit shows there are 3 voltage sources involved into this resistive network, and also there are 3 resistances. Now, the circuit has also been marked by the points A, B, C, D, E, and F. While looking onto the circuit, we don't see any loop between the point C and F, whereas we want to calculate the voltage across the points C and F. Therefore, we develop
an imaginary line and we consider the voltage VCF as connected in the form of a voltage source between the points C and F. Now, when we will be applying the KVL to this circuit, we can apply the KVL to two separate loops. We can consider two parts for finding voltage VCF that are A, B, C, F and back to A, and C, D, E, F and back to C. Now, first of all, we take the mesh A, B, C, F and back to A. Starting from the point A, when we are trying to move towards the point B, applying KVL to the path A, B, C, F and A, we can write, while we are at point A and facing towards B, in between we can see a circuit element in the form of a resistance, and across this resistance we have been given a voltage drop of 4 volts, whereas according to the passive sign convention, the terminal which is near to the point A has been marked as negative. Therefore, we will write minus 4. We go through this resistance and reach at the point B. While we are at the point B, we are facing the 9-volt source. And also we can see that the terminal which is facing the point B, that is positive. As we are at the point B, we can see that the positive terminal of the 9-volt source is facing us. Therefore, we can write a positive sign and the value of the voltage source, which is 9, hence plus 9. We go through this voltage source and reach at the point C. When we are at point C, now we have to face, according to our loop which we earlier defined as A, B, C, F, A, we will be facing towards the point F. Now, if we consider that the terminal of the VCF voltage source which is facing to the point C is having a negative sign, then we can also write plus VCF. Now, reaching at the point F, we are facing towards the point A. And in between the point F and A, we can see that the voltage drop across this resistance has been marked as 6 volts. Also, the terminal which is towards the point F has been marked as negative. Therefore, we will write minus 6. We go through from this resistance to reach at the point A, and that is our concluding point. Therefore, we equate all this to 0. Now, simple mathematics, rearranging the equation and doing some addition and subtraction, we can have VCF is equal to 1 volt. इसी मिसाल को फर्दर लेते हुए हम दूसरे पास से VCF की वैल्यू को कैलकुलेट करके देख सकेंगे कि उसके आंसर में भी यही वैल्यू यानी
1 वोल्ट आएगी। आइए दूसरी लूप की इक्वेशन को केवीएल के जरिए लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ applying Kirchhoff's voltage law to the loop C, D, E, F and back to C, we can write the loop equation for this path as well. While standing at the point C and looking towards the point D, we can see that there exists a circuit element in the form of a resistance. The voltage drop across this resistance has been marked as 5 volts, whereas the terminal of the resistance, which is towards the point C, has been marked as positive. Therefore, we can write plus 5. Now, we can hop over to the point D. While we are at the point D and looking towards the point E, we can see that there also exists a voltage source in between the point D and E. Therefore, we must include this voltage source value as well into our equation. Before we include this voltage source value into our equation, we can also observe that the positive terminal of the voltage source has been connected to the point D. Therefore, once again, we write the positive sign before this term and write as plus 6. Now we hop over to the point E. And once again, we encounter a voltage source which is having a value of 12 volts. However, the negative terminal of this voltage source has been connected to the point E. Therefore, we will write minus 12. And we go through this voltage source to reach at the point F. While we are at the point F and looking towards the point C, there exists an imaginary voltage, source or drop, whatever you can say, named as VCF. And remember, while writing the KVL equation for the previous loop, we have considered that the positive sign of the voltage source VCF is towards F. Therefore, we keep the same sign notation and write plus VCF and equate all this to 0. Now, simplifying it, we can write VCF is equal to 1 volt. अजीज तलबा, अभी हमने देखा कि किसी भी रेजिस्टिव नेटवर्क में अगर हम कोई 2 पॉइंट्स लेकर उनके दरमियान वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहें तो केवीएल का सहारा लेते हुए किस तरह से ये काम निहायत आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। ये भी हमने देखा कि दोनों लूप्स में से कोई सी भी लूप को उठाकर हम इक्वेशन लिखना शुरू कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों केसेस में हमारा जवाब एक ही रहता है। इससे अगली मिसाल में भी कुछ ऐसा ही मामला है, मगर इसमें वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। जब हम वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस सोर्स की वैल्यू परफेक्टली नहीं दी गई, बल्कि इस सोर्स की वैल्यू किसी और करंट की टर्म्स में दी गई होती है। लिहाजा हमें पहले उस करंट को कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उस
वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मिसाल में भी कोई से 2 पॉइंट लेकर उनके दरमियान वोल्टेज को कैलकुलेट करना सिखाया गया है। आइए स्लाइड पर सर्किट को देखते हैं। Slide shows a resistive network consisting of 2 voltage sources. One of these sources is a voltage dependent voltage source, whereas the other one is voltage independent voltage source. The voltage independent voltage source is having the value of 12 volts, whereas the voltage dependent voltage source is having the value of 4Vx. There are some resistances also shown into this circuit. We want to calculate the voltage VCE and VAD. As we can clearly see that there is no physical closed path in between these points. Therefore, we can redraw this circuit as shown. There are 2 paths in which VAD is the only unknown quantity. They are AD, EA and AB, C and AD, CBA. अब जबकि हमने इस सर्किट में, जैसा कि स्लाइड में आपने देखा, डिजायर्ड पॉइंट्स के दरमियान इमेजिनरी एरोस लगाकर और वोल्टेजेस की वैल्यूज लगा ली हैं, तो हमारे लिए केवीएल इक्वेशन को लिखना निहायत आसान हो गया है, क्योंकि हमारे पास अब एक इमेजिनेटिव क्लोज्ड लूप आ गई है। आइए इसकी फर्दर ट्रीटमेंट को स्लाइड पर देखते हैं। फॉर पाथ ADEA, we can apply the Kirchhoff's voltage law and write KVL equation as, obviously, we will start from the point A. When we are at the point A and looking towards the point D, we can see that between the points A and D, we have marked a voltage level which is V subscript AD. And we consider that the terminal of this voltage, which is towards the point A, is positive. Therefore, we write plus VAD. Now, from the point D, we will be moving towards the point E. While we are moving towards the point E, we can see that there exists a circuit element in the form of a resistance. The voltage drop across this resistance has been given as 1 volt. Also, towards the point D, a negative sign has been shown. Therefore, we can write minus 1 volt. We cross through this resistive element and reach the point E. When we are at the point E, obviously, we will be looking onto the point A. And once again, we encounter a voltage-dependent voltage source in between the points E and A. Now, this voltage-dependent voltage source has been given the value 4 times Vx. Also, the terminal of this voltage source, which is towards the point E, has been marked as negative. Therefore, we will write minus 4 Vx and equate all this to 0. Now, simplifying it, we can put up the value of Vx
because if you look at the top of the circuit, across one of the resistive networks, it has been already given that Vx is equal to 2 volts. Therefore, it declares the value of the voltage dependent voltage source as 8. Hence, we can rewrite this KVL equation as VAD minus 1 minus 8 is equal to 0. Or in other words, we can write VAD is equal to 9 volts. अजीज तलबा, अब हम दूसरी लूप को लेकर उसकी केवीएल इक्वेशन लिखते हैं. आइए स्लाइड पर चलते हैं. फॉर द पाथ ए डी सी बी and back to A, we can apply the KVL to write the loop equation as, when we are at the point A and looking towards the point D, once again, as we have done the practice in the previous loop, that we encounter an imaginary voltage source in the form of VAD. And also we consider that the positive conventional sign of the imaginary source VAD is marked towards the point A. Therefore, we write plus VAD. Now, we cross over this source and reach at the point D. At the point D, when we are facing towards C, we encounter an independent voltage source which is having a value of 12 volts. We can also see that the negative terminal of the independent voltage source has been connected to the point D. Therefore, we will write minus 12 so that we go through this voltage source and reach at the point C. Now, while we are at the point C, we are facing towards the point B. And once again, we encounter a voltage drop across the resistive element, and this voltage drop has been given the value of Vx is equal to 2 volts. Also, the terminal of the resistive element, which is towards the point C, has been marked as positive. Therefore, we will write plus 2 so that we can go through this element and reach at the point B. When we are at the point B and looking towards the point A, once again we encounter a resistive element whose terminal near to the B has been marked as positive, and the voltage drop across the resistance has been marked as 1 volt. Therefore, we write plus 1. Going through this resistive element, we reach at the point A, which is our starting point. Therefore, we equate this expression to 0. Rearranging and doing very simple addition and subtraction, we reach at VAD is equal to 9 volts. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने KVL को अप्लाई करते हुए कुछ लूप्स इक्वेशंस और नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस का कंपैरिजन भी देखा, जबकि हमने कुछ ऐसी मिसाल भी देखी जिसमें बज़ाहिर तो क्लोज लूप नजर नहीं आती, लेकिन हमें एक तखय्युलाती क्लोज लूप को डिजाइन करना पड़ता है. अभी ये मिसाल पूरी नहीं हुई है, इससे आगे दूसरी वोल्टेज को भी कैलकुलेट करेंगे जो कि अगले लेक्चर में देखा जाएगा. आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ चाहता है.
अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।